stored? The information submitted by you is encrypted and safely stored in the server. So information about me like where I go. President Rajnath Singh to address the nation on eve of 74th Independence Day at 7 p.m. today. The address to be broadcast on the entire network of All India Radio and all channels of Doordarshan in the evening. Chief Minister Ashok Gehlot led Rajasthan government wins a vote of confidence in the State Assembly. India marches ahead with Atmanirbhar Bharat, establishes its global position with export of 23 lakh PPEs in 1 month only. Union government also distributes more than 1.28 crore PPEs to states and union territories. Supreme Court holds Prashant Bhushan guilty of contempt for tweet derogatory to the CGI and his 4 predecessors. Court says it will hear on August 20th the arguments on sentence. Union Sports Minister Kiren Rijiju launches Fit India Freedom Run today. The largest country-wide run will encourage fitness and help citizens to get freedom from lifestyle diseases. US brokers the historic peace agreement between Israel and UAE to normalize diplomatic ties in the Middle East region. The agreement is a new era for the country, says Israeli Prime Minister Netanyahu. Namaskar and welcome all of you. You are watching Doordarshan News. I am Kiran Shah, presenting the evening bulletin. Now let's move for the live press conference of Prashant Gehlot. के लिए प्रारंभिक निवारक शिक्षा के लिए स्वयंसेवी युवाओं को समुदाय के साथ काम करता है। नशीली दवाओं पर आश्रितों के लिए परामर्श और लिंकेज उपचार तथा पुनर्वास सेवाओं के साथ स्क्रीनिंग, मूल्यांकन और काउंसलिंग के लिए एक केंद्र, आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर होगा। नशीली दवाओं पर आश्रित व्यक्तियों के लिए इन पेशेंट सुविधा वाले एक नशा मुक्ति केंद्र यदि एनजीओ द्वारा चलाया जा रहा है तो व्यसनियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र IRCA, और यदि सरकारी अस्पतालों द्वारा चलाया जा रहा है तो ATF कहलाता है, संचालित किया जाएगा। इन सुविधाओं केंद्रों को जियो टैग दिया गया है ताकि जनता को उनके निकटतम IRCA, ODIC, CPLI की तलाश करने और उनकी सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा होगी। नशीली दवाओं ड्रग्स के समस्या से निपटने के लिए 2017 में किए गए 43 करोड़ रुपए के वित्त पोषण को बढ़ाकर 2020 में 260 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह 5 गुना वृद्धि इस विषय को सरकार द्वारा दी गई जा रही अहमियत को दर्शाती है। मुझे आपको यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि मंत्रालय के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई स्थापित की गई है। इस PMU में 20 युवा और योग्य पेशेवर शामिल हैं जो इन्हें आवंटित राज्यों के राज्य समन्वयकों के रूप में कार्य करेंगे। PMU का ब्यौरा साझा किया गया है और वे नशा मुक्त भारत अभियान के साथ साथ अन्य स्कीमों को आगे ले जाने में आप सबके साथ सक्रिय संपर्क में हैं। इनमें से अधिकतर राज्यों में वास्तविक रूप से मौजूद है और इस अभियान के औपचारिक शुभारंभ में आप सबकी मदद करेंगे। मैं इस अवसर पर सभी राज्य सचिवों, जिला कलेक्टरों और उनके दलों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत कम समय में
मंत्रालय को अपना उत्तर दिया और कोविड के ऐसे मुश्किल भरे वक्त में अभियान के लिए अपना कीमती समय दिया और प्रयास किया है। मैं NAPDDR स्कीम को सफलतापूर्वक चलाने में इस मंत्रालय की सहायता करने के लिए राज्य सरकारों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और नशा मुक्त भारत अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अपने अपने राज्यों के लिए प्रशासनों का मार्गदर्शन करने और उनकी सहायता करने का अनुरोध भी करता हूं। So that was the live press conference of Thawarchand Gehlot, the Social Justice Minister, and he was just addressing that from 15th of August onward, Nasha Mukt Bharat Abhiyan should imply to the 272 districts. So he held the virtual conference with the district collectors regarding this Nasha Mukt Bharat. So in this mission, he just determined and he told all the district collectors to work in rigorous manner so that the justice can be provided to the people, each and every household, and taking care of this Nasha Mukt Bharat, each and every individual will be complying with the good health. And also he addressed related to the coronavirus pandemic, how it can be saved, how we can take the the precaution and the measures in containing the COVID-19 pandemic in India. Now let's go live for the press conference which JP Nadda is addressing. मुझे याद है कि उनका एक बार फोन आया, मैं दिल्ली था, कि मैं आपसे दिल्ली मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आप दिल्ली मुझसे मिलने क्यों आएंगे, मैं आपकी जब भी चंडीगढ़ आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं आऊँगा, मुझे आना है। मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा कि आप दिल्ली आएंगे, मैं आता हूँ। उन्होंने कहा तुम नहीं जानते, मैं आऊँगा। वो आए दिल्ली। मैंने कहा मैं आपसे मिलने पंजाब भवन आ जाता हूँ। बोले नहीं, मैं कार्यालय आ रहा हूँ। ये देखिए समर्पण, हमारे से वो इतने बड़ी उम्र के प्रथम जनरेशन के नेता, और वो कह रहे हैं कि कार्यालय आता। मैंने कहा ठीक है जी। हम आए, बैठे, चाय पी। हमने कहा क्यों आना। उन्होंने कहा देखो मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो पार्टी के बारे में समझता हूं वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। ये तड़प आप समझिए, ये देखिए कि जिस रास्ते से हम गुजरे हैं, उस रास्ते पर पार्टी चल रही है। मन को बहुत खुशी होती है, मन को बहुत अच्छा लगता है, मन को लगता है कि पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इसको इसी तरीके से बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे कुछ सुझाव हैं, उन सुझावों को मैं रखने यहां पर आया हूं। आप देखिए, आप समझिए कि जीवन के शाम पर राजनीति से एक तरीके से अपने आप को अलग रखने के बावजूद वह पार्टी के प्रति कितने चिंतित थे, यह इस घटना से प्रतिलक्षित होता है। मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी था, वो छत्तीसगढ़ के गवर्नर बन गए। बाद में मैं स्वास्थ्य मंत्री बन गया। मैं प्रभारी था, मैं छत्तीसगढ़ गया, छत्तीसगढ़ में रायपुर में रुका, दिन भर मैंने काम किया। काम करने के बाद शाम को मैंने दिल्ली आने का निश्चय किया। मुझे फोन आ गया, कहने लगे, मैं कहा गवर्नर साहब का फ़ोन है। मैंने कहा गवर्नर साहब, रामजी दास जी हैं। मैंने कहा हाँ जी, फ़ोन हमने सुना। कहने लगे बिना घर आए कैसे वापस जा रहे हो। मैंने कहा जी गलती हो गई। लेकिन मैंने कहा देखिए मैं पार्टी का महासचिव हूँ और राजभवन वो राजसत्ता का केंद्र होता है, तो मैंने सोचा कि मैं और गवर्नर को पार्टी के दृष्टि से मैं उस दृष्टि से देखता हूँ। उन्होंने सीधे कहा कि बेटा और पिता में कोई संबंध में कोई बीच में गवर्नरी आती है क्या? अपने घर आए बगैर तुम जाओगे क्या? मुझे आज भी याद है कि मैंने फ्लाइट कैंसिल की, मैं दूसरे दिन सुबह गया, मैं सीधा राजभवन गया, वहाँ रुका, उनके साथ बातचीत की, भोजन किया। उन्होंने मुझसे कहा अगली बार रायपुर में आना हो तो ये ध्यान में रखना कि रहना भी यहीं है और यहाँ मुझसे मिले बगैर जाना नहीं। मैं इसके बाद मैं रहा तो नहीं, लेकिन हाँ जब भी मैं रायपुर गया तो मेरा प्रयास रहा कि उनके साथ चाय पी करके ज़रूर उनसे दो बातें करके, और जब भी मैं मिला उनसे उन्होंने हमेशा बहुत दूरदृष्टि रखने वाली बातों को हमारे साथ कहा।
So that was the JP Nadda's, address about the Balram Das Tandon Memorial Lecture he just addressed virtually, and he just stated about the Balram Das Tandon's, life and his profile, that he was Rashtriya Swayamsevak Sangh Pracharak, and he hailed from the Chhattisgarh. He was a veteran politician also, and he was the governor of Chhattisgarh. Now, moving on for the next story, an update from Rajasthan. The Gehlot-led government has won the motion of confidence in the Assembly, State Law and Parliamentary Affairs. Minister Shanti Kumar Dhariwal tabled a proposal for the trust vote in the State Assembly. BJP State President Satish Punia opposed the trust vote. He said the farmers and the youth of the state are seeking answers from the government. Punia alleges the promises made during the polls have not been kept. He also alluded to the failing law and order situation in the state, including rise in crimes against Dalits. आज सदन के अंदर जो प्रदेश की सरकार विश्वास मत लाई थी, उसको बहुत अच्छे बहुमत के साथ सदन ने आज पारित किया है, और जो भी अटकलें लगाई जा रही थी उसको आज विराम मिला है। मैंने सदन के पठन में भी बहुत संक्षिप्त में इस बात को कहा। The Bahujan Samaj Party had earlier issued a whip for the second term to the 6 of its MLAs in Rajasthan to vote against the Congress in any proceedings in the State Assembly. The party in a statement said if they violate the same, they will face disqualification. And for more, our correspondent Dharmesh Bharti joins us live from Rajasthan. Dharmesh, what is the latest update we know with you? The Congress is in win-win condition now because the Ashok Gehlot government has won the trust vote in the Assembly. बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अशोक गहलोत सरकार ने जो है विश्वास मत हासिल कर लिया है। आज जब सदन शुरू हुआ 1 बजे, तब संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विश्वास के लिए जो है प्रस्ताव रखा, और जो स्पीकर हैं उन्होंने उसको स्वीकार करते हुए बहस के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों सदस्यों को आमंत्रित किया। जहां विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार की खामियों को पटल पर रखा, बताया कि किस प्रकार पिछले 30 दिन से भी अधिक सरकार जो है बाड़ेबंदी में है, और जो राज्य की जनता है, चाहे कोरोना का हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, इन सभी मोर्चों पर विफल रही है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की अपनी अंतर्कलह है, उस अंतर्कलह के कारण जो है जनता को भुगतना पड़ा है, जनता को जो है उसके जो काम है वो कहीं ना कहीं रुके हैं, और आम जन के अंदर जो एक सरकार के प्रति विश्वास था, उसमें विश्वास में कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। तो वहीं जो पक्ष के नेता हैं उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि जो भी कुछ हमारे मुद्दे थे वो हमारे आंतरिक मुद्दे थे, हमारे इंटरनल इश्यूज थे, और उसमें जो है किसी अन्य दल को उसमें कहने का या बात रखने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि उन्होंने अपनी बात रखी, और पूरा का पूरा जो पक्ष है, सरकार है, वो सदन के अंदर एकजुट तो नजर आई, लेकिन आखिर ये सब कब तक रह पाता है और कब तक ये जो एकता है वो कब तक रह पाती है, ये तो अब आने वाले समय में पता लग पाएगा। हालांकि आज उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया है, लेकिन जो सदन के अंदर जब सचिन पायलट को लेकर, तो सचिन पायलट भी जो है खड़े हुए और उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, और उन्होंने अपना बचाव करते हुए ये कहा कि मैं जो भी इश्यूज हैं उनको मेरे पर लेकर या मुझे लेकर यहाँ डिस्कस नहीं किया जाए, आप जो भी मुद्दे हैं आप मुद्दों पर चर्चा करें। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि विश्वास मत तो जरूर हासिल हुआ है, लेकिन ये कितना क्या आगे जनता के विश्वास में कायम हो पाता है, ये देखने आने वाले समय पता लगेगा। Yes, Dharmesh, the 1 month long political crisis has ended now, but it's not certain up to when it go, successfully. But still, it's relaxed for period for the state government as well as the Congress government also. The Congress party too. And Ashok Gehlot also promised that he will not let his government to get collapsed. So this was the willpower he sustained till today. He had the very
confident about his MLAs, that MLAs will definitely come into his pocket and they'll vote, as well as he had the confident, he kept his confidence about his, the Sachin Pilot and his, the supportive MLAs who were there in his, in his score also. देखिए, जब कल बैठक हो गई थी, बैठक के अंदर सचिन पायलट और उनसे जो जुड़े हुए विधायक थे वो कल सीएमआर में पहुंचे थे, तो वहां उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया था कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार को की स्थिति में हम अस्थिर नहीं होने देंगे। तो कल ही ये स्पष्ट हो गया था कि जो दोनों गुट हैं उनमें कहीं ना कहीं हाईकमान से कहने के बाद एक सुलह और समझौता कहीं ना कहीं हुआ है। तो आज वो विधानसभा में देखने को मिला। अब ये जो आपसी इनकी विचार हैं या किन इश्यूज के ऊपर इनमें यूनिटी हुई है और कितने इश्यूज वो आगे एड्रेस हो पाते हैं, ये सब तो सब आने वाले समय पे ही पता चल पाएगा। आज उसके बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। Thank you, Dharmesh, for giving all this input from Rajasthan. Now, moving for the next development, earlier the House paid tributes to former Member of Parliament Governor Lalji Tandon and former Chhattisgarh Chief Minister Ajit Jogi and other prominent leaders who recently passed away. The Speaker then adjourned the House till 1 p.m. President Rajnath Singh will address the nation on the eve of 74th Independence Day today. And the address will be broadcast from 7 p.m. on the entire national network of All India Radio and telecast over all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. Broadcast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by broadcast in regional languages by regional channels of Doordarshan. All India Radio will broadcast regional language version at 9:30 p.m. on its respective regional networks. The nation will celebrate the 74th Independence Day tomorrow. Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in celebrating the Independence Day from the majestic Red Fort in New Delhi. Prime Minister will unfurl the national flag and address the nation from the ramparts of iconic monument. Security has been tightened in the national capital in view of the celebrations. In view of COVID-19 situation, the Delhi police has requested the invitees to follow guidelines issued by Union Home Ministry and Health Ministry at all times while they are in the function area at Red Fort. Delhi police has issued a traffic advisory to ensure safe and smooth vehicular movement across the national capital on Independence Day. Ministry of Home Affairs announced the list of police medals on the eve of Independence Day 2020. A total of 926 medals, including gallantry, distinguished service and meritorious service medals, have been awarded to state and central police forces personnel. A total of 215 personnel got police medal for gallantry, while 80 were awarded President's Police Medal for distinguished service, and 631 got police medal for meritorious service. CRPF got the highest number of police medals with 118, followed by UP Police with 102 and Jammu and Kashmir Police with 94. Jammu and Kashmir Police got 81 police medals for gallantry, 1 President's Police Medal for distinguished service and 12 police medals for meritorious service. A total of 94 police medals were awarded to Jammu and Kashmir Police. And now moving for the next story, Australian Prime Minister Scott Morrison extended warm congratulations to the people of India ahead of the country's Independence Day. In his message, the Australian Prime Minister said, as a long-standing friend of India, Australia joins wholeheartedly in its celebration of independence and extends our warm congratulations to the people of India. The Australian Prime Minister highlighted the elevation of bilateral relations to a comprehensive strategic partnership between India and Australia. Morrison further said the deep friendship between Australia and India is about more than trade and diplomacy. Prime Minister Morrison said, while this year's celebration will be different and many of the traditional gatherings will not take place, we can all draw strength from the values that our countries share.
Supreme Court refused to extend interim bail of Unitech promoter Sanjay Chandras. Court said Chandra and his brother Ajay Chandra have failed to deposit rupees 750 crore as directed by the three-judge bench in October 2017. The Supreme Court also refused to give 2 weeks' time to surrender, as sought by the counsel for Chandras. The court also asked the Delhi police to investigate all aspects of illegalities, including cheapening of the funds by Chandras, as pointed out by forensic auditor. It also asked Additional Solicitor General ASG to file a separate comprehensive affidavit giving details of the steps being taken by the investigative agencies. The Supreme Court today held Prashant Bhushan guilty of contempt of court for his tweets against the judiciary. Taking suo motu cognizance, the apex court initiated contempt proceedings against him for his 2 separate tweets on CJI, Bobde and the Supreme Court. The top court will hear the arguments on sentence against him on August 20th. Maximum sentence can be of 6 months in jail. According to the United Nations, the death toll from last week's massive explosion in Lebanon's capital has risen to nearly 180, with an estimated 6,000 people injured and at least 30 missing. Meanwhile, India has expressed solidarity with the people of Lebanon in the aftermath of tragic explosions in Beirut. India has sent 58 MT of emergency humanitarian aid, including crucial medical and food supplies to Beirut in IAF C-17 aircraft. Now coming on for the next story, Raksha Mantri Rajnath Singh participated in Atmanirbhar Bharat Saptah Samapan ceremony through video conferencing from New Delhi. During this event, Chief of Defence Staff General Vipin Rawat was also present. Under the Atmanirbhar Bharat Saptah, the Naval Innovation and Indigenization organization was also being launched by Raksha Mantri Rajnath Singh on Thursday through video conference. The Atmanirbhar Saptah was initiated by the minister to push for Make in India on August 10th. Union Minister of Youth Affairs and Sports Kiran Rijiju today launched the largest countrywide run, the Fit India Freedom Run. The event is being organized to mark the 74th Independence Day of India tomorrow, 251 birth anniversary of Mahatma Gandhi on October 2nd. Individuals and organizations can register for the event on Fit India website. Speaking on this occasion, Rijiju urged countrymen to actively take part in Fit India Freedom Run, which would commence from tomorrow morning on Independence Day. My request is tomorrow from the early morning, this Fit India Freedom Run, it must start trending. We have to create a record. Kiran Rijiju also said that the Fit India Freedom Run would evoke patriotism in youth to another level. Holding flags and running or walking in the early morning, this is something, it boosts your, patriotism. It makes you feel more for your nation. These are some of the thoughts which gives, tremendous strength in the way you perform and you think as a citizen of India. The Centre has been leading the graded preemptive, proactive and collaborative response and management of COVID-19 along with the states and UT's governments, turning the pandemic into an opportunity to develop its domestic market for production of medical equipment. India has hugely ramped up its own manufacturing capacity. In the month of July itself, India exported 23 lakh PPEs to 5 countries, and these include USA, UAE, UK, Senegal and Slovenia. This has substantially aided India to position itself in the global export market of PPEs. The Make in India spirit embedded in the Atmanirbhar Bharat Abhiyan has resulted in provided resilience and the self-sufficiency to the country for various medical equipment including PPEs.
While the union government is supplying PPEs, N95 masks, ventilators, etc. to the states and UTs governments, states are also procuring these items directly. Between March to August 2020, they have procured 1.40 crore indigenous PPEs from their own budgetary resources. During the same period, the centre has distributed 1.28 crore PPEs to states and UTs central institutions free of cost. Successful implementation of testing aggressively, tracking comprehensively and treating efficiently has ensured a rising recovery rate, which stands at 71.17% today. The total recovered of COVID-19 patients have increased to more than 17.5 lakh. The recoveries exceed the active cases by 6,61,595, nearly 11 lakh, 89,960, and the case fatality rate is pegged at 1.95% today and maintaining its path of steady decline. As a result of ramping up its testing facility on a sustained basis with the aim of touching 10 lakh tests per day, India has touched a new height of the highest number of tests in a single day so far. And a record high of 8,48,728 tests were conducted in the last 24 hours. And this has taken the cumulative test to 2,76,94,416. In Bihar, the flood situation continues to deteriorate with flood water inundating 11 more panchayats in past 24 hours. Currently, over 77 lakh people across 1,282 panchayats in 16 districts are flood affected, and 33 teams of NDRF and SDR are carrying out relief and rescue works. Over 5.5 lakh people have been shifted to safer places. Till now, 25 people have lost their lives in flood-related incidents across the state. 7 relief camps are presently operational, where 12.5 thousand people are taking shelter. Over 1,000 community kitchens are also being run, provided food to around 8.717 lakh people. COVID testing facilities are also being provided at all relief camps and community kitchen areas. The government has disbursed gracious relief of rupees 6,000 each to over 7 lakh flood affected families till now. MBTA department has predicted light to medium rainfall in and around these rivers areas. It has also predicted heavy rainfall at isolated places across the state on August 16 as well as 17. And that was all in this edition of news. Keep watching for other national and international updates. Till then, namaskar.